First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture we shall prove the theorem based on quadratic congruences with composite modulo. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला फक्त एवढंच पाहिजे की या क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएंस विथ कंपोजिट मॉड्युलोवर एक थेरम आहे. वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट थेरम. या ठिकाणी फक्त आज आपल्याला एवढा थेरमचं प्रूफ घ्यायचं, एवढं थेरम प्रूव्ह करायचे. ओके, नाउ हियर इन द क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएंस कंपोजिट मॉड्युलो, then actually this is the last section of the third unit, that is the equation x square plus y square is equals to z square. This equation which we have to prove, and also we have to prove the Pythagorean triple. हे आपण उद्या झालं तर उद्याच्या लेक्चर मध्ये घेऊ किंवा परवा घेऊ, आणि हे घेतल्यानंतर मग आपला हा थर्ड युनिट संपतो. बाकीचा जो फोर्थ युनिट आहे आपण दीपावलीच्या नंतर घेऊ. उद्या किंवा परवाला हा युनिट आपण संपवून टाकू, राहिलेले दोन पार्ट. आज आपण फक्त या क्वाड्रॅटिक रेसिप्रोसिटी लॉ हा याच्यावरचा थेरम आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा आहे. ओके, नाउ वी शॅल डिस्कस दिस थेरम. आता आपण थेरम घेऊ. क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएंस विथ द कंपोजिट मॉड्युलो. Quadratic congruence with odd primes moduli have been the important role in the theory of congruences. Okay, now what is the quadratic congruence with composite modulos here? The statement of the theorem which tells us that here theorem ची स्टेटमेंट समजून घ्या. Theorem: if P is an odd prime, and GCD of A comma P is equals to 1, then the congruence x square is congruence to A mod P raised to n for n is greater than 1. Here's a solution. If and only if Legendre symbol A over P is equals to 1. Legendre symbol A over P is equals to 1. Actually, we have to prove this theorem. That means the pattern of this theorem is as like if and only if. ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट पैटर्न है, इफ एंड ओनली इफ जैसा थ्योरम का स्टेटमेंट पैटर्न है. आपको अगर ये थ्योरम प्रूव करना है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस x square is congruence to A mod P raised to n has a solution. Then we have to prove A is congruence, Legendre symbol A over P is equals to 1. And second part, if Legendre symbol A over P is equals to 1, then the quadratic congruence with composite moduli x square is congruence to 1 mod P raised to n.
परंतु ॲक्च्युअली हाफ पार्ट तर ऑलरेडी खूप सिंपल आहे. हाफ पार्ट तर प्रूव्ह असल्यासारखंच आहे. जर एक्स स्क्वेअर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी है, पी रेज टू एन है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी, and if this condition satisfies, if this quadratic congruence has a solution, definitely then we can say that, what we can say that the Legendre symbol A over P is equals to 1. हा पार्ट आपला थेरमचा खूप प्रूफ आहे किंवा ऑलरेडी प्रूफ असल्यासारखंच आहे. सी दिस प्रूफ. The half part of the theorem, half part of the proof is trivial. ऑलरेडी प्रूव्ह केलेला आहे, आपण अगोदर सुद्धा खूप वेळा प्रूव्ह केलेला आहे. ट्रिव्हियल. whereas the other part, other half part requires हाफ पार्ट वी हॅव टू प्रूव्ह. आता हाफ पार्ट ऑलरेडी कोणता आहे पहा प्रूव्ह केलेला. इफ एक्स स्क्वेअर इज अ कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी रेज टू एन हॅज अ सोल्युशन, this implies that the congruence x square is a congruence to a mod p also has a solution. and अगर x square is a congruence to a mod p, इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है द लीजेंड्री सिंबल ए ओवर पी विच इज इक्वल्स टू 1. ये फर्स्ट पार्ट है, ये ऑलरेडी हमने बहुत बार देखा हुई है. इट इज द वेरी वेरी सिंपल पार्ट. सी दिस. इफ पी इज एन ऑड प्राइम एंड जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इज इक्वल्स टू 1, देन द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी रेज टू एन. दिस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट मॉड्यूली. has a solution if and only if the Legendre symbol A over P is equals to 1. अभी इसका जो हाफ पार्ट है तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है. ये देखो ये हाफ पार्ट बहुत बार हो गया है, इसको अभी ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको पता है अगर सीरीज अगर एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी रेज टू एन इज द क्वाड्रेटिक congruence with composite modular has a solution. This implies that x square is congruence to a mod p is also has a solution. इसको अगर solution है तो इसका मतलब होता है इसका भी solution है. और अगर इसका solution है then definitely we can say that the Legendre symbol, value of the Legendre symbol a over p is equals to 1. अभी हमें कॉन्वर्स प्रूव करना है, वही इंपॉर्टेंट है. देखो कॉन्वर्सली यानी कि क्या प्रूव करना है, कंडीशन लेके रिजल्ट प्रूव करना है. इसको हम सफिशिएंट पार्ट भी बोलते हैं. नेसेसरी पार्ट तो हम डायरेक्टली प्रूव कर दिया है, बहुत बार हो गया है भी है. सफिशिएंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इफ द लीजेंड्री सिंबल ए ओवर पी इज इक्वल्स टू 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस विथ कंपोजिट मॉड्यूलो एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी रेज टू एन हैज अ सॉल्यूशन. ये भी प्रूव करना है. सो कॉन्वर्सली सपोज दैट what we have to suppose, we have to consider the result. Legendre symbol A over P which is equals to 1, then we have to prove x square is congruence to A mod P raised to n. He has a solution.
ये प्रूव करना है हमें। यहां पे क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दिस। दिस कैन बी प्रूव्ड, एक्चुअली दिस कैन बी प्रूव्ड by the method of induction. By the method of induction, that is, if n is equals to 1, then x square is congruence to a mod p. a mod p raised to 1 होता है. This implies that x square is congruence to a mod p, and you know that if Legendre symbol a over p होता है तो it has a solution. Therefore the condition is true for n is equals to 1. Therefore the condition is true for n is equals to 1. अभी क्या करना हमें? We have to consider the value of n which is equals to k, which is greater than 1. Suppose that see this student, suppose that n is equals to k which is a greater than 1. अभी 1 के लिए तो हमने देख लिया है greater than 1. This implies that the quadratic congruence x square is congruence to a mod p raised to n. p raised to n का मतलब होता है p raised to k. Let we have to suppose that it has a solution x0. Let this congruence has a solution x0. This implies that we can write x0 square is congruence to a mod p raised to k. अभी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, this implies that x0 square equals to a plus k into b into p raised to k for some integer b. ये देखो, ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवायझर प्लस रिमाइंडर. हा जो फॉर्म आहे ना स्टुडंट्स तुम्हाला दिसतो तो कसा आहे? डिविडंड इज इक्वल्स टू कोशेंट किंवा हा रिमाइंडर अगोदर घेतला प्लस कोशेंट इनटू डिवायझर. इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ इन पासिंग फ्रॉम k टू k प्लस 1, आता आपल्याला रिप्लेस करायचे k प्लस 1. वी शॅल यूज x0 and b. Now here we have to use x0 and b. So the solution for the congruence we can write that's congruence x square is congruence to a mod of p raised to k plus 1. The
first we solve the linear congruence. Now first we solve the linear congruence. तुम्ही एकदा थेरम व्यवस्थित लिहून घ्या, मी परत एकदा समजून सांगतो. फर्स्ट वी सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस, लिनियर कॉन्ग्रुएंस 2x0y which is congruence to minus b mod of p. Okay, minus b mod of p, and it has a unique solution x0. See this, and here we can write this as has a unique solution. Suppose say y0 mod of p, because GCD of 2x comma b comma p which is equals to 1, because GCD of 2x0 comma p is equals to 1. Now consider the integer. Now consider the integer. See here we consider integer. Next page ला घेतो. What is that integer here? X is equals to x0 plus y0 into p raised to k. So we can write, this implies that by squaring, means we can suppose this is x1, second solution x1, so x1 square is equals to x0 plus y into p raised to k bracket square. So this is x0 plus 2x0 y0 p raised to k plus p raised to k, यानी कि 2k. But we know that या ठिकाणी आता तुम्हाला व्हॅल्यू माहित आहे पहा, 2x0 y0, see this 2x0, अगर y0 सोल्यूशन होता है तो 2x0 y0 आणि हा मायनस या साईडला घ्या, विच इज इक्वल्स टू 0 मॉड p, म्हणजे यालाच आपल्याला सोल्युशनच्या स्वरूपामध्ये लिहिता येतं 2x0 y0 that is x0 square plus b into 2x0 y0 bracket close p raised to k which is equals to p raised to 2k into y0 square. इथं एक टर्म राहिली वाटतं पहा स्टुडंट्स, एक मिनिट. a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर y0 square into p raised to 2k, y0 square into p raised to 2k. Therefore we can write this as x0 square, म्हणजे त्याला आपल्याला असं लिहिता येतं a प्लस b प्लस 2x0 y0 ब्रॅकेट रेज टू p रेज टू k plus y0 square into p raised to 2k. This is a x1 square, but p divides b plus 2x0 y0. So this we can write, अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y0 is the solution, 2x0 y0 is equals to minus b mod p, यानी कि b प्लस 2x0 y0 इज इक्वल्स टू 0 मॉड p. तो इसका मतलब होता है p डिवाइड्स दिस. ओके,
याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो P डिवाइड्स दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसका मीनिंग होता है x1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x0 प्लस y0 p रेज टू k ब्रॅकेट स्क्वेअर, हा 0 ने डिवाइड होता. So which is a congruence to, therefore a plus mod of p raised to k plus 1. So which gives x1 square is congruence to a into mod of p raised to k plus 1. Okay, this is true for any value of n is equals to k plus 1. Hence we can write x square is a congruence to a mod of p raised to n has a solution and hence proved. आता हा थेरम जरा व्यवस्थित घ्या, काय म्हणतात तुम्ही, मी परत एकदा समजून सांगतो, 1 मिनिट. हे सर्वच तुम्हाला परत एकदा समजून सांगतो, थोडं वेट करा. हा y0 2p रेज टू 2k. ओके, तर या ठिकाणी आता आपण हाच थेरम परत एकदा पाहू. थोडा टिपिकल थेरम आहे पण काही अवघड नाही आहे. सी दिस quadratic congruence with the composite modulo. If p is an odd prime and we have to show that, काय प्रूव्ह करायचं पहा, we have to show that if x square is congruence to a mod p raised to n, this is a composite modulo, has a solution if and only if a is congruence to p mod, if and only if the Legendre symbol a over p is equals to 1. अभी हमें ये प्रूव करना है. देखो अभी क्या होता है, द हाफ पार्ट यानी कि जो नेसेसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी रेज टू एन, अगर ये है तो लीजेंड्रे ये ओवर पी होता है. ये तो सिंपल है, हमने बहुत बार देखा है. अगर एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी रेज टू एन हैज अ सॉल्यूशन, this implies that the congruence x square is congruence to a mod p and x square is congruence to a mod p है, तो we can write as x square is congruence to a mod p. इसका मतलब होता है ये GCD of a comma p is 1, so it has a solution. Then we have the condition that the Legendre symbol a over p is equals to 1. अभी second part important है, sufficient part, that is if Legendre symbol a over p is 1, then we have to prove that, what we have to prove, x square is congruence to a mod p raised to n, that is a quadratic congruence with composite modulo p raised to n. This is the composite modulo. हाँ, तर काय करणार, first of all we have to prove this theorem. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंसिडर करना है, लीजेंड्रे सिंबल ए ओवर पी इज इक्वल्स टू 1, देन वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड पी रेज टू एन हैज सॉल्यूशन. दिस कॅन बी प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन. मेथड ऑफ इंडक्शन मीन्स कुठलाही जर nth पॉवर तुम्हाला प्रूव्ह करायचं असेल तर n इज इक्वल्स टू 1 ठेवा, n इज इक्वल्स टू k ठेवा आणि k प्लस 1 ठेवा आणि मग हा फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचा. k वरनं k प्लस 1 प्रूव्ह होतो आणि जेव्हा k वरनं k प्लस 1 प्रूव्ह होतं एक स्टेप वाढवल्यानंतर, तेव्हा दैट इज इन जनरल इट इज प्रूव फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. सो इफ n इज इक्वल्स टू 1, देन
x square is congruence to a mod p raised to 1, x square is congruence to a mod p has a solution. आता the condition is true for n is equals to 1. Suppose we consider n is equals to k which is greater than 1, तो यहाँ पे p लिखना है. अगर इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हम कंसिडर करते हैं x0, देन x0 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod p raised to k. इसका मतलब होता है x0 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू a mod b p raised to k. सपोज दिस इज 1, याला 1 समजा. ठीक है. नाउ बाय प्रूव पासिंग फ्रॉम k टू k प्लस 1, आता k टू k प्लस 1 करत असताना एक ना पॉवर वाढवायचा असतो, इन्क्रीज करायचा, म्हणजे मल्टिप्लाइंग बाय p रेज टू k. वी शॅल यूज x0 अँड b. आता x0 and b यूज करू. द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, नाउ वी हैव टू कंसिडर p रेज टू k प्लस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द लिनियर कॉन्ग्रुएंस 2x0 y इज कॉन्ग्रुएंस टू मायनस b mod p. आता ह्याचं जर सोल्यूशन y0 असेल, 2x0 y इज कॉन्ग्रुएंस टू मायनस b mod p, एक लिनियर कॉन्ग्रुएंस आपण कन्सिडर केला. लिनियर कॉन्ग्रुएंस आपण कन्सिडर केला की ज्याचा रिमाइंडर मायनस b आहे आणि क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएंस 2x0 y0. त्याचं सोल्यूशन y0 असेल gcd 1 2x0 p is 1. So x1 is equals to x0 plus y0 ब्रैकेट रेज टू p. अभी देखो यहां पे x0 स्क्वायर, इथं पहा, 1 minute. हाँ, x1 square. आता x1 we have considered another solution. x1 is equals to x0 plus y0 p raised to k. हा जो सोल्यूशन आपण y0 या ठिकाणी कन्सिडर केला म्हणून y0 p raised to k. एक्सपान्शन काय राहायचं, x1 स्क्वेअर बाय स्क्वेअरिंग a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर नुसार a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. बट वी नो दॅट x0 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 x0 स्क्वेअरची व्हॅल्यू ठेवा. काय ठेवाल तुम्ही, a प्लस b p रेज टू k, a प्लस b p रेज टू k प्लस 2x0 y0 p रेज टू k. वाटलं तरी इथं फ्रॉम 1. समजण्यासाठी लिहा फ्रॉम 1. मग असं केल्यानंतर पहा x0 स्क्वेअरची व्हॅल्यू इथं ठेवली. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ x0 स्क्वेअर फ्रॉम 1. x0 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू a प्लस b p रेज टू k. मग आता या ठिकाणी पहा p रेज टू k कॉमन काढा. a इज इट इज b प्लस 2x0 y0 ब्रॅकेट क्लोज p रेज टू k इज कॉमन. मग आता तुम्हाला माहित आहे हे जर सोल्यूशन असेल, दिस इज द सोल्यूशन आहे. कशाचं सोल्यूशन आहे, b प्लस x0 y0 p रेज टू k. दिस इज द सोल्यूशन. अहो काय ही सोल्यूशन आहे, या लिनियर कॉन्ग्रुएंस क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएंसचं सोल्यूशन आहे y0 mod p. म्हणजे याला लेफ्टला घ्या, b प्लस 2x0 y0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस. देअरफॉर दिस इम्प्लाइज दॅट p डिवाइड्स, याच्या आधारावर आपल्याला लिहिता येतं p डिवाइड्स b x0 y0, म्हणजेच p रेज टू k डिवाइड्स दिस. सो वी कॅन राइट दिस एज x1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू x0 प्लस y0 p रेज टू k ब्रैकेट स्क्वायर. इसका मतलब होता है ये x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू मॉड ऑफ p रेज टू k प्लस 1. दैट इज x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मॉड ऑफ p रेज टू k प्लस 1. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज x0 p. हाँ, तो इसका मतलब होता है x1 स्क्वायर मीन्स x1 इज द सोल्यूशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, x1 इज द सोल्यूशन ऑफ a इज कॉन्ग्रुएंस टू, हाँ सॉरी x1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू a mod p रेज टू k प्लस 1. इसका मतलब होता है x1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस.
आता x1 सोल्युशन आहे म्हणजे या क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएन्सला सुद्धा सोल्युशन आहे. जे क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएन्सला आपण सोल्युशन कन्सिडर केलं होतं, एक्स स्क्वेअर इज के ठेवल्यानंतर पहा, हां एक्स स्क्वेअर इज कॉन्ग्रुएन्स टू ए मॉड पी रेज टू केला x0 सोल्युशन आहे म्हटलं होतं. यालाच पी टू के प्लस 1 घेतल्यामुळं x1 इज अ सोल्युशन. कारण काय इथं दिस इज द ट्रू फॉर n is equals to k plus 1. का ट्रू आहे? बिकॉज x1 इज द सोल्युशन ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक कॉन्ग्रुएन्स p रेज टू k plus 1. म्हणजे x1 सोल्युशन आहे, म्हणजेच याचा अर्थ एक्स स्क्वेअर इज कॉन्ग्रुएन्स टू ए मॉड पी रेज टू n. n म्हणजेच काय? k plus 1. n हॅज अ सोल्युशन. k plus 1 ला जर सोल्युशन असेल x1 तर याचाच अर्थ k plus 1 कॅन बी रिप्लेस्ड बाय n. सो इट हॅज अ सोल्युशन अँड हेन्स प्रूव्ड. हा थेरम अशा पद्धतीनं प्रूव्ह होतो. आता जास्त काही हा चॅप्टरमधला घेत बसत नाही, काही नाही. आता राहिलेला जो पार्ट आहे लक्षात घ्या, हा एक थेरमच आहे, याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स वगैरे काही नाही आहेत. राहिलेला जो पार्ट आहे आता इक्वेशन्स एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू झेड स्क्वेअर आणि पायथागोरियन ट्रिपलेट, हा जो पार्ट आहे आपण बहुतेक परवाला घेऊ, उद्याला होणार नाही, परवाला घेऊ. परवाला हा दोन्ही संपून जातो, प्रॉब्लेम्स आणि एक थेरम आहे, परवाला संपून जातो. आणि नंतर मग दीपावळीच्या नंतर आपण राहिलेला जो शेवटचा युनिट आहे 4th युनिट घेऊ. तर आज इथं आपण थांबू. एकच थेरम मला घ्यायचा होता, जास्त काही गरज नाही. सो वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय.